good afternoon to all the distinguished guests, respected officers, and everyone present here today. It is an immense pleasure and honor to welcome you all to the inaugural function of handing over of sound level meters and training program for police officers organized by the Manipur Pollution Control Board for selected police stations of Imphal West and Imphal East districts. Today's programs marks a significant initiative towards strengthening the implementation and enforcement of the noise pollution, regulation and control rules 2000 in the state of Manipur. In recent years, noise pollution has increasingly become a matter of public concern, particularly in rapidly developing urban areas. Unregulated use of loudspeaker, vehicular noise, and commercial activities often disturb the residential zones, educational institutions, hospitals, and other silence areas. Such disturbances not only affect public comfort but also have serious implications for physical and psychological well-being. Addressing these challenges requires scientific monitoring, timely intervention, and coordinated action between enforcement agencies and environmental authorities. So, recognizing the vital role of the police department in the implementing of the Noise Pollution Rules 2000, this program has been designed to equip officers with both the necessary instruments and the technical knowledge to carry out their responsibilities effectively. The ability of the police stations to respond to complaints, assess violations accurately, and ensure compliance with prescribed ambient noise standard. So with your kind permission, we shall now commence the formal proceedings of today's program. So as our respected distinguished dignitaries have kindly taken their seats on the dais, to express our deep respect and gratitude, the Manipur Pollution Control Board would now like to felicitate our esteemed dignitaries with a token of appreciation as a mark of honor and acknowledge of their valuable presence. So may I request the concerned officials to kindly present the token of appreciation to Shri Arun Kumar Sinha, IAS Principal Secretary, Forest, Environment, Climate Change, Government of Manipur, and Chairman, Manipur Pollution Control Board, which is our chief guest of today's function. Thank you, sir. Now we would like to felicitate Dr. T. Brajakumar Singh, Director, Environment and Climate Change, Manipur, which is our chief guest of honor of today's program. Thank you. Now we would like to felicitate Dr. W. Rosen Singh, Member Secretary, Manipur Pollution Control Board, which is the President of today's function. Thank you, sir, for graciously accepting this small token of our esteem and appreciation. Your presence and guidance mean a great deal to all of us. May I now invite L. Homenjoy Singh, Informatics Officer, Manipur Pollution Control Board, to deliver the welcome address. On behalf of Manipur Pollution Control Board, I extend a warm welcome to our esteemed chief guest, Shri Arun Kumar Sinha, IAS, Chairman MPCB, and Principal Secretary, Forest and Environment, Climate Change, Government of Manipur. Our guest of honor, Dr. T. Brajakumar Singh, Director, Directorate of Environment, Climate Change, Government of Manipur. Our
President of this function, Dr. W. Roshan Singh, Member Secretary, Manipur Pollution Control Board. I also extend a warm welcome to all officers of Manipur Police Department and other distinguished participants. Today's program reflects our collective commitment to addressing noise pollution, a significant environmental and public health concern. The distribution of sound level meters along with the training of police personnel is an important step towards strengthening effective enforcement of noise regulation. I express my deep appreciation to Government of Manipur and all departments involved for their continued support and cooperation. I am confident that this initiative will contribute meaningfully towards creating a healthier and more peaceful environment. Thank you. Thank you, sir, for your warm and informative welcome address, which has beautifully set the content for today's program. Up next, we have speech by the dignitaries. So now, may I request Dr. W. Roshan Singh, Member Secretary, Manipur Pollution Control Board, and today's President, to deliver his presidential address. Respected Chief Sir, Sri Arun Kumar Sinha, IAS, Chairman of Manipur Pollution Control Board, and Principal Secretary, Forest, Environment and Climate Change. Respected Dr. T. Kumar Singh, guest of honor of today's function, and Director, Environment and Climate Change, Manipur, and my esteemed colleagues, scientists, engineers of Manipur Pollution Control Board, members of the media, and most importantly, the police personnel who have joined us from various stations across the state. A very warm and pleasant afternoon to all of you. It's an absolute honor to welcome you to this inaugural function. Today marks a significant milestone in our state's environmental governance. We are not hosting a routine administrative gathering. Instead, we are hosting a synchronized technology-driven partnership between environmental scientists and law enforcement agencies. Today, the Manipur Pollution Control Board is distributing 10 world-class cashless sound level meters at 10 police stations across the state. It is crucial to understand the driving force behind this initiative. This distribution is in direct subsequent action taken by the Manipur Pollution Control Board in response to the NGT directives. It states that every police station should have at least one sound level meter. It's important that because as per the Noise Pollution Regulation and Control Rules 2000, it states that for implementation of the noise pollution rules, the concerned SP and the concerned district administration are responsible. So it is more important that the police personnel, the police officers are equipped with the tools and the technique to measure noise level in the enforcement of these rules. I hope that this training program will enlighten you on how to use these sound level meters, how to operate it, what is the calibration procedure, and how to identify troubleshooting. I hope this program will be a grand success for all of you. Thank you. Thank you so much, sir, for your comprehensive and insightful address. Now, we will have speech from our guest of honor. So I'd like to respectfully invite Dr. T. Kumar Singh, Director, Environment and Climate Change, Manipur, to kindly address. A very good afternoon to all. Respected Principal Secretary, Sir Kumar Sinhaji,
Chairman, Policy Control Board and Principal Secretary, Forest and Environment Machines, my friend Dr. W. Lawson Singh, Member Secretary, Policy Control Board, the dignitaries and officers from different institutions, different government line departments, and officers from Policy Control Board, friends from media, and to all. In fact, there's lots of rules and regulations to be followed by the people as a citizen of India. So we are the responsible to honor such kind of act and rules which is imposed by the government of India in this matter. If the rules and acts is enforced rightly in the right manner, then the city or the national state may treat it as a very educated state. So the enforcement, the implementation is done through this all line department. That's why we are here. We have the line departments, like the law enforcing agency, the police department. In the rules of this noise pollution, the 2020 was delivered by the government media, it spell out everything, what to be done and what not to be done. Government India, through the state government, Pollution Control Board, Manipur State, has already identified the zones, where to be the silent zone, where to be the disindustrial zone. So that standard of the soil level to maintain this all prescribed in these rules. And today, it's very fortunate that the government India, through this state pollution control board, is handing over the equipments to the 10 police stations of the state. I think now, last time we have already given some training program to all the concerned officers. That time also I was present in this policy, I think. So training, today we are delivering the equipment to be handled it. To friends, the equipment which is going to be hand over today is not kept in the site. Please use it. Please try to enforce the act and rules, whatever given by the government media to you, and enforce it. And let's try to educate the people also. Because the environmental consciousness, environment act and rule is very important for our next generation. If we are not following this kind of act and rules of the environment protection, that the planet may not be kept for the next generation. So we should protect this planet by enforcing all these rules of the environment related issues, so that we can think for the next generation. So it is not only the noise pollution, there's lots of rules under the Environment Protection Act, like waste management, where to be done with the solid waste, liquid waste, and not to protect, not to cut down the trees, lots of rules. So wherever possible things we can try to follow it. And see, in Manipur, we experience that in many cases, in many occasions, unnecessarily using all the noise of this or loudspeakers. So it is not good to listen all, and we know that if this decibel level, the pitch of the sound may affect to increase more and more diseases also, especially the heart disease or vulnerable peoples like aged peoples or small kids, and even it's drastically impacted the students also. So we can try to control those things by educating the people and by enforcing the rules and acts. So, we unnecessary loudspeaker so far minds of unnecessary. People educate government agency government employee level message government framed already, but enforcement of government is zero honor to the
Prajana Madu Egan Salina Muna to the Equina. The quick agency and a quick moment agency level, but the bridging with Sangam. Women say I investment of Sangam. That's why we should take the responsibility to educate the people as a common agency. We are responsible to enforce the rules also. So this is the mandate of the government employee is to respond to the government rules. We have to quick family nirga so the community yargadi quick silence on the home to the one or silence on harang level some sort of a map never governing silence on kill level. So the whole thing only we do first one people, second one people, the whole silence on then because it's on part of it where they I think the boom parliament the civil have rules machine they do have it. That's what like on the SC element here. Gas solar and truck solar jungle over the place I pass it on. What Hambiraga in a token, one people final post away, man was final post away. Soon open up soon the outer the way soon has it up the Anna the provider stay young not constant hope with a man with the house in memory, she must have been more up with a see ma'am, we gave kind of say hello to the current way. Last day I request to all my colleagues that to try to make the enforcement well and try to educate people also. And let's try to perform our response was given by the government. Thank you. Yogamani Sharma from Imphal Police Station. Next, I would like to call. Thank you. Up next, I would like to call again SICH Purnachan and SIM Roshan Singh from Sintamai Police Station. Thank you. Next, I would like to call SIY Romesh Singh and SICH Somorjit Singh from CP Police Station. Thank you. Thank you, sir. Thank you to our chief guest for handing over the key. And up next, I would like to request our guest of honor, sir, to hand it over to our police officers, that is SI Muhammad Mansur Khan of Irbung Police Station and SI Sabir Ahmad of Lamlai. ASI K Romeo Singh of Irbung Police Station. Thank you. Next, I would like to call SI Sabir Ahmad of Lamlai Police Station and ASI L Kogentro Mayday of Lamlai Police Station. Thank you. Next. Thank you. Next, I would like to call upon ASI Muhammad Ahmad Ali of Andro Police Station and ASI Muhammad Akbar Hassan of Andro Police Station. Next, I would like to call
ASI Josendung Malangmai of Hengang Police Station and ASI M. Ajit Kumar Singh of Hengang Police Station. Thank you to our chief guest of honor. And next, I'd like to request our president, sir, to hand it over to our sir, ASI Priyobartan, ASI EC Solon. Thank you so much, sir. Director Environment Shri Ibraz Kumar Singh, Member Secretary, District Control Board, Dr. W. Roshan Singh, other participants from the law enforcement agency and police, my friends from media, and other dignitaries present here. I welcome you all here today on this occasion of distributing this noise meter to the law enforcement agency. The Pollution Control Board has provided you this Act and the Rule 2000, which is Noise Pollution Regulation and Control Rules 2000. And this rule really entrusts to you or thrust upon you the big responsibility of enforcing the rules related to noise pollution. And you will really be doing great service to the society by enforcing these rules, which really has a very harmful effect on the health, on the public health. It is not only a mere annoyance, but it is serious environmental hazard with widespread impacts. And the key effects include permanent hearing damage, chronic sleep disruption, heightened stress, and significantly increased risk of cardiovascular disease like high blood pressure and heart failure. So, as I said, this noise pollution is, we may not realize the harm that it is doing to the human being. Not only the human being, it also does harm to the this ecological and wildlife disruption. For example, related to this wildlife, this noise pollution severely impacts biodiversity. It interferes with the ability of animals to communicate, navigate, and attract mates over long distance. It also leads to the survival of the wild animal because this mass sound makes it difficult for predator animal to hunt and for prey to detect incoming threats, often altering natural habitat distribution. So you just imagine you are not only helping the human being, but you are also helping the wildlife near us. Most of noise pollution, you all know. But the issue is, I think we are not sufficiently aware about this harmful effect of this noise pollution. The rule also provides for what should be the limit in different area. For example, it says in industrial area, daytime it should be 75 decibel and nighttime it should be 70 maximum. In commercial area, it is daytime 65, nighttime 55. Residential area, daytime it is 55, nighttime 45. Silent zone, daytime it is 50, nighttime it is 40. So you can imagine, you just see it, but hardly we are aware of all this. We are not even putting the silences in different area. But what is the allowable noise level
that is allowed by as per the rule. So that's where I say that it's your duty to really enforce these rules in different areas. And you'll be doing a great service to the society, as I said, because the one thing is that making people aware what is the rule is related to this, and the second is the enforcement. Unless you make people aware, they will also not be taking care of. Actually, they may not know that they are violating any rules. So that's where the duty of law enforcement agency is very, very important, both in terms of making people aware and also enforcing these rules so that people can be saved from this harmful effect of noise pollution. Today we have distributed the noise meter so that you can measure the noise level in different areas and you can decide what are the measures that government should take that people can be saved from the harmful effect of this noise pollution. So today is a great occasion and we are distributing these noise meters. Now it is your duty to first train your people, those who are going to enforce this law, how to measure the noise level, and then enforcing the rules so that these rules are implemented in later respect. So I really welcome you all today, and I hope this session will really make us aware about the effect of this noise pollution on our health, and also how we are going to enforce it and how we are going to make people aware. So I once again I wish that this kind of gathering is going to help us and really help us in implementing the rules which is provided by NGT. And today Government of India and NGT is really very particular about enforcement of all these rules. We may not realize, but it is silently harming us, harming especially our children. If you have a high noise level in the school area or in the residential area, because it disrupts your sleep also. And when it disrupts your sleep, again that leads to many kind of harmful effect on our health. So I once again request the law enforcement agency that please take advantage of these kind of I'll say the workshop and the function that we have, so that we make people aware about these rules and also enforce them in later respect. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir, for briefing us. I request our guest of honor to hand it over to us, sir. And I am a senior sales and application engineer in Kasela, India, and I have around 15-year experience in this field. So this is my number, mobile number, and my email ID is also mentioned in this PPT. If we talk about our experience from Leh to Kanyakumari, we supplied all the state police control board and police department. Even all the police state and pollution control board are our customers. So this is the rule. Why state PCB and pollution control board or police departments are purchasing these equipments. So this is the reasons and purpose, like firecrackers, pressure horns, DJ, music sets, parties, DJ sets and loudspeakers.
And this is the guideline for State Pollution Control Board. So, selection of noise level meter. It clearly mentions type 1 instrument is required. In first point, 4 number point, it clearly mentions type 1 integrating sound level meter with free field microphone is required. And fifth number point is calibration. So, before the test and after the test, we have to calibrate the instrument, and the measurement range agrees to within 1 dB, plus minus 1 dB. Okay? So, along with the instrument, we also supplied calibrator. So, same thing, industrial, commercial, residential and silence zone. Daytime, what is the noise, and night time, what is the noise. This is some training programs from other states. We especially design our kit for Indian police, like our instrument is IEC 61672-2030 approved, inbuilt GPS, password protected memory also included in these equipments. Nobody can delete the data without entering the password. So on-field dot matrix printer, printout, logo, everything is inside the kit. And this is the print report. So if we see, first one is the logo, I think pointer. Otherwise I will show you. First one is logo. Second one is make, model, serial number, start time, and this point calibration. Before and after the calibration, and calibration changes minus 0.1 decibel. So in rule, plus minus 1 decibel is allowable. So it is in the limit. Here is the lots of results. LAEQ. For police personnel, LAEQ is the mandatory parameter. What is the meaning of LAEQ? L means level, A means audible frequency, and equivalent. EQ means equivalent. So it shows 61.7 decibel. And here location, GPS location, GPS coordinates. Okay, so this is the report. So I already said, from Leh to Kanyakumari, all the state pollution control board and police are our customers. Our OEM office available in India. We have toll-free number for service support. Local service center for Northeast we have in Guwahati, not in Imphal, we have in Guwahati. Free training, extended warranty and support, everything is available. Now, you just open your kit. Just open your kit. Okay. So, if you see inside the kit, there is one sound level meter. So, this type of sound level meter is available in your kit. Okay? This type of sound level meter. Okay, sir? So, like watch, you just open it. Okay? And insert the battery.
insert the battery. Okay? Battery inserted. Okay? Done? Then you just close it. So close. Okay? Then red button is here. Red button. You just press the red Press the red button. Red button. Sir, please show me your screen also, sir. Yeah, okay. Okay, done. 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 Okay. Then we will use this one. Windshield. This is windshield. No windshield. Windshield. Okay? Now, if you see, this screen is available. This screen. Okay? Red screen is available. At upper side, if you see, there is one mark. This is GPS for this sign is for GPS. Inside the room, GPS can't able to on. So you have to go outside for GPS. Okay? Second step, menu. You see menu. For menu, you just press this button. Okay? This display will come. Okay? So, if you go in first, select first one, then first one is setting option, second one is time. If you want to change the time, third one is brightness, yes, brightness, okay, you just select it, okay, already done, okay, so I will explain. After that, we will explain. So these are the options available in this first option. Okay? These are the four options. If you want to set some time now, you just go in second option and change the time or date. Okay. After that now you just press exit button. Exit button. Exit. Okay, this button. Exit. Again, same screen. There is 3 files only. 3 files. Okay. Second one is memory results. And if you select memory results, then you just press select button 2 or 3 times. And you can also able to delete from this screen also.
Okay, second option is delete option. Second option is delete option. Okay, sir. Are you able to delete the result? No. You just select the result, any one result. Select. Now, here from password. अब ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है जब आपको Okay. So after that we just press exit button. Exit. 1, 2, 3, 4. Until the red display will come. Until the red display will come. Okay. Then if you see, if we want to start the recording of the sound level video, then we press mid button, the big side button, play button. Okay, sir? The play button. You just press it. Okay? Yes, sir. Okay. Oh, okay. I will show you. This. Okay. If you see upper side of corner, okay, there is time 1, 2, 3, 4, it shows seconds. Okay, so after 1 minute, again you just press this button, big size button, again. It asks stop run, yes or no. Okay, then you just press yes. Yes. Okay, yes. 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 Now, again press the exit button 2 times. Again press the exit button 2 times. Okay. Red display is available? Yes, start duration. Red display. Red. You just show the screen now. Yes, sir. You just go in menu. Menu. You just go in menu. Okay. Menu. Okay. Second option memory result. Second option memory result. Okay. And in memory result, if you just select the memory result.
Select the memory result. Select the memory result. Okay, okay, done. Uh, if you select the result now, it shows the same time. Okay, na? So this is the procedure of recording the data. Okay. This is the printer. Okay. Printer. Sir, अगर इसको टेबल टेबल पे इस पे okay, this is the printer. Press the on button. On button. On button. On. On button. Okay, done, done, done. On button, done. Okay. Use this cable, white cable. White cable. This cable. Up. No, no, no. This one. White cable. No, no. No. One minute, sir, sir. 1 minute. Okay. White cable. White cable. White cable. White cable. White cable. Okay. There is two end of cable. Okay. One end is mini USB. Mini USB. It goes towards the SLM. SLM. You just connect it in sound level meter. You just open it. Okay, done, done, done. This one here. Okay, done, done, done. You use my printer, but after the training now, because in my printer some other logo is पावर बैंक से इसको चार्ज यहाँ पे देना है. Okay. After that menu, again we have to select menu.
सर हो सकता है menu. Second option, memory result. Select, select, select. This one is printer option. Okay. Select, print. इनका किट जो है ना चार्जिंग में चेंज हुआ है ना आपका लग रहा है कि लाल वाला बटन नहीं आ रहा नहीं वो प्रिंट वाला निकाला है उस वजह से दो लाइट चल रहा है स्पीड को पूरा चला है साउंड लेवल में मैं उसका कर सकता हूँ और स्पीड जो है उसको प्रिंट सबका आ गया आपका प्रिंट आ गया सब आ गया ना ठीक है ओके का
ठीक है, सबका प्रिंट आ गया। सर एक बार ना ये सब हटा दें, अपना जो बंद कर दीजिए, हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। ये जो प्रोसेस जो भी आप कर रहे हैं सर, इसको सभी लोग रिपीट कर लेते हैं। स्टार्ट करके हाँ, एक बार जो है ना, सबका प्रिंट अभी आ गया है, सब क्या करें, एक बार रिपीट कर ले इस प्रोसेस को। रीडिंग लेना, प्रिंटर कनेक्ट करना और प्रिंट आउट निकालना। हाँ, तो सर एक बार जो है ना, जो भी आपने सीखा है सर, उसको रिपीट कीजिए सर। फिर से प्रिंट निकालिए, नया रीडिंग लीजिए, एकदम स्विच ऑफ साउंड इंजीनियर को स्विच ऑफ कर दीजिए, बिल्कुल स्विच ऑफ कर दीजिए, फिर से नया रीडिंग लीजिए, फिर से प्रिंट निकालिए। ठीक है, बिल्कुल सारा प्रोसेस एकदम नया। डेट एंड टाइम सब लोग सेट कर लो। डेट एंड टाइम को नीचे कीजिए। डेट एंड टाइम चालू करके टाइम नीचे कीजिए। सर आपका प्राइस आ रहा है। डेट एंड टाइम सेट है सर, सर डेट एंड टाइम सेट है सर डेट एंड टाइम सर डेट एंड टाइम सेट है। ठीक है सर, डेट एंड टाइम सेट है सर, डेट एंड टाइम सेट है सर। सही तो आप आ गए हो, बस इसको कटिए नहीं। डेट एंड टाइम सही है सर उसका। ठीक है सर, हो गया डेट एंड टाइम। अब क्या कीजिए सर, नया रीडिंग लीजिए इस टाइम का, नया रीडिंग सर इस टाइम का लेंगे और एक एक प्रिंट आउट निकालेंगे सब कोई। अभी का एक नया रीडिंग लेके एक एक प्रिंट आउट निकालेंगे। रीडिंग कम से कम 1 मिनट का होना चाहिए, कम से कम मतलब मिनिमम 1 मिनट। ठीक है सर, मिनिमम 1 मिनट का रीडिंग लेना है सर और एक प्रिंट आउट निकालना है। सर मिनिमम 1 मिनट का रीडिंग लेके निकालना है। एक मिनट का रीडिंग लेकर के प्रिंट आउट अभी के डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग सर। एक मिनट का रीडिंग है आप लोगों ने 1 मिनट से ओके सर, हो गया सबका। वो रीडिंग लेके प्रिंट आउट निकाल लीजिए और को पैक कर दीजिए, उसका स्टॉक कर दीजिए। एक बार सर नया रीडिंग लेके प्रिंट आउट निकाल के फिर से आप अपना पैक कर दीजिए। ऊपर में देखिए सेकंड आ रहा है ना सर, अगर आपको क्या नहीं चाहिए हाँ स्टॉप करना है, स्टॉप करना है उसको।
बाद बताऊंगा। सर एक रीडिंग हो जाने के बाद इसको स्टॉप करके फिर जो बच्ची जो है आपका जो स्लिप है इस स्लिप को आप 1 मिनट के बाद में आप इसको स्टॉप करके फिर पोस्ट का प्रिंट आउट एक बस रीडिंग हो गया 1 मिनट अभी नहीं हुआ है। जैसे 1 मिनट हो गया बंद पूरा सर उसको उसको तो दबाना ही नहीं है सर ये बटन तो मैंने दबाना मैंने क्या बोला इसको दबाया स्टॉप करना है हाँ वाला बटन अब इसको क्या लगाइए और उसको प्लीज ये डाला इसमें बस बच्ची अभी नहीं सर इसी बात है ना ठीक है अब जैसे यहाँ पे इसी बात है ये भी नहीं दिया आएगा सर आएगा या ये देखिए अभी आप ये कौन सा जैसे ये वाला दिया था एक सेकंड का सेकंड का फिल्टर है अभी आप कौन सा दिया फिल्टर चालू किया आपने नहीं चालू कीजिए प्रिंटर ठीक है ये आपने मेनू में गया अभी आपने कौन सा लिया ये वाला सर हो गया सबका प्रिंट हो गया सर एक प्रिंट होने के बाद में बंद कर दीजिएगा प्रिंट करके तो सब स्विच ऑफ करके रख दीजिए और सर प्रिंट तो करा जहाँ सब निकल गया हाँ नहीं सर अभी कैलकुलेशन होगा ना हो गया सर सबका प्रिंट सब प्रिंट हो गया ना सर सब स्विच ऑफ करके इसको रख दीजिए सर हाँ स्विच ऑफ करके रख दीजिए प्रिंटर स्विच ऑफ कर हाँ सर ठीक है अब सर मेन पॉइंट है कि सर इसमें देखना क्या है साउंड लेवल मीटर से स्विच ऑफ करके रख दीजिए साउंड लेवल मीटर का ब्रो उसको स्विच ऑफ करके रख दीजिए ठीक है सर सर रख दिया सर सबने अब सर ये स्लीप है मेन चीज ठीक है स्लीप में आप देखेंगे जो रिजल्ट है उसमें LAEQ आ रहा होगा रिजल्ट में LAEQ रिजल्ट में LAEQ जो है वो डेसिबल लेवल है सर LAEQ उसको टिक कीजिए सर LAEQ को टिक कर दीजिए सर LAEQ को टिक कर दीजिए सर LAEQ को टिक कर दीजिए सर उसके सामने जो रिजल्ट है वो डेसिमल लेवल है सर कितना ठीक है हो गया सर हो गया डन ठीक है ये डेसिबल LAEQ को अगर फुल फॉर्म लिखना होगा तो वहां पे आप लिख सकते हो L के नीचे लेवल A के नीचे ऑडिएबल और EQ के जगह पे इक्विवेलेंट लेवल ऑडिएबल इक्विवेलेंट ठीक है हो गया ठीक है अब क्या है कि जैसे सर ने आपको जो रूल दिया या मैंने जो रूल दिखाया डे टाइम नाइट टाइम ये सारे रूल्स हैं ये जो है नॉइज रूल 2000 के लिए है लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर डिवीजन है उसके लिए वो रूल है लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस है ट्रैफिक पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर नहीं देखना है ट्रैफिक पुलिस को देखना है वेहिकुलर नॉइज में आपको क्या देखना है हॉर्न देखना है साइलेंसर देखना है और
सायरन वगैरह देखना है, ये सारी चीजें देखनी है, ठीक है। तो अगर आप उसमें आप क्या करोगे सर, एमवी एक्ट, जो CMVR एक्ट 1989 है, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल जो है 1989, उसको फॉलो करोगे। तो जो आपके यहाँ RTO डिपार्टमेंट होगा, RTO होगा सर आपके यहाँ, RTO डिपार्टमेंट होगा ना सर, RTO, ठीक है। RTO में सर CMVR एक्ट आप वहां से ले सकते हैं। इसमें क्या है कि ये सारे रूल्स हैं, ये सारे रूल्स जो हैं वो मैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दूंगा और यहां से आपको मिलेगा। सर इसमें अगर आप देखते हो सर, 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स का कितना दे रखा है सर, 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स का कितना है आपको, 85 dBA से 112 dBA है सर, इतना आपको रेंज है, 83 dBA से 112 dBA। क्यों सर, जैसे स्कूटी है 100 सीसी के अप्रोक्स का, तो उसमें अगर आप ट्रक का मतलब ट्रक का अगर हॉर्न लगाते हो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो जो है 83 dBA से स्टार्ट होता है 112 dBA तक, 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स का, 7 किलो वाट तक का उसका जो मोटर का जो CCM जो होते हैं उसका कैपेसिटी होता है। और जो बड़े जो होते हैं उनका 93 dBA से 112 dBA तक। और आपको इसमें जो आपका मोटर व्हीकल जो है RTO, वहां से आपको रूल लेना पड़ेगा, हॉर्न का कितने पे काटें, हॉर्न का, साइलेंसर का और इंजन नॉइज, इसके लिए आपको ये सब चीजें लेनी होगी वहां से। अब ये वाला पॉइंट है सर, मेजरमेंट कैसे लेना है, साइलेंसर का मेजरमेंट कैसे लेना है, उसका यहाँ पे डिस्टेंस दिखाया हुआ है, पूरा साइलेंसर का कैसे मेजरमेंट लेना है, हॉर्न का कैसे लेना है, वो ड्राइंग आपको दिया हुआ है। ये सारे IS स्टैंडर्ड जो हैं CMVR के, वहां से सीधे मैंने क्या किया है कि उनका फोटो जो कैप्चर करके सीधे यहाँ पे डाल दिया। ओके, बाकी ये गाड़ी के लिए है, 4 व्हीलर्स के लिए कैसे उसका नॉइज करना है। बाकी सर साउंड लेवल मीटर के ऑपरेटिंग में आपको कोई डाउट, किसी को ऑपरेशन में ऑन कैसे करना है, रीडिंग कैसे लेना है, प्रिंट आउट कैसे निकालना है, किसी को डाउट सर? सर साउंड लेवल मीटर का रीडिंग लेना, प्रिंट आउट निकालना, उसका क्या डेसिबल लेवल होता है, इसमें कोई डाउट सर आपको? कोई डाउट सर? कोई सर डाउट? सर आपको नहीं। रूल्स एंड रेगुलेशन सर आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मोटर व्हीकल जो आपको RTO ऑफिस है, दोनों जगह से आपको लेना होगा, क्योंकि सर लॉ एंड ऑर्डर का सर देंगे और जो उसका है ट्रैफिक का वो आपको मोटर व्हीकल वहां से मिलेगा सर RTO। ठीक है, ओके सर, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो सर, अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हो, क्योंकि ये एंड है। सर कोई क्वेश्चन? सर बताएं। यस सर, यस सर, उसका 1.5 मीटर्स का डिस्टेंस वही तो हम सर, मैं उसी के लिए आप पूछो जो मन करो पूछो, और बता रहे हैं उसका सर कोई क्वेश्चन सर, मतलब कैसे ऑन करेंगे या नॉइज कैसे? सर
तो बता नहीं सकते उसके बाद क्या करोगे? देखिए इस फॉर्म ये जो ऑपरेटर है उसका सिग्नेचर आप उसको लिख दें। ये जो कल्प्रिट है जिसको आप पकड़े उसका सिग्नेचर रहेगा और एक विटनेस का आपको लेना पड़ेगा। अगर जैसे कोई आपका सबऑर्डिनेट है या कोई है उसका एक विटनेस का साइन है। हाँ कोई या कोई और अदर पब्लिक का भी ले सकते हैं। अगर कोर्ट में अगर आप इसको सबमिट किए और उसको जमा किए तो विटनेस का साइन है, विटनेस का फोन नंबर भी ले सकते हैं। एडमिसेबल ये पूरा एडमिसेबल होता है कोर्ट में। और जीपीएस जब आप ये बाहर जाएंगे तो जीपीएस अपने आप चालू हो जाएगा। थोड़ा देर आप 10 मिनट आपको बाहर रखना पड़ेगा, वो आपका जीपीएस आएगा और उसमें जीपीएस कोऑर्डिनेट्स आ जाता है। तो क्या होगा अगर बाई चांस कोई बोलेगा कि आप कहाँ थे तो आप जीपीएस कोऑर्डिनेट डाल करके उसको बता देंगे यहाँ पे ये रीडिंग ली जाती है आपके पुलिस स्टेशन के बगल में या आपके ट्रैफिक के जहाँ पे आपका ट्रैफिक है वो पूरा जीपीएस कोऑर्डिनेट्स आ जाता है। तो अगर आप गूगल मैप में मारेंगे तो आप जैसे जीपीएस कोऑर्डिनेट को मारेंगे तो आपका डेट टाइम के साथ में वो आ जाएगा। हाँ हाँ ये जैसे आपका जीपीएस लोकेशन है ना, जीपीएस लोकेशन आपका तो आपको पता चल जाएगा कि डीजे पे बज रहा था तो आपको कितना रेटिंग था और ऑफ हो गया तो उस समय एनवायरनमेंट का इस्तेमाल बता रहा हूँ आपने कुछ जैसे डिफरेंस आएगा इसके बारे में जो मेन होता है जैसे हाँ कोई पार्ट वहाँ पे कैसे चलाना अब जैसे मैंने परमिशन आपसे मेरे पास बगल वाले घर वाले ने कंप्लेंट करा तो मैं इसके चलान कैसे करूँ? पहले बिना इसको इन्फॉर्म किए आके मैं गेट से जो बाउंड्री है वहाँ से इसका रीडिंग ठीक है रीडिंग ले लिया LAEQ जो है आपका वहाँ पे उसको मार्क करो सर LAEQ जो है मार्क करो सर ठीक है ले लिया यहाँ पे 65.9 आया सपोज है ऐसा नहीं है कि आया उसके बाद जाके उसका डीजे या जो भी है उसको बंद कराए ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ गया मेरा यहाँ पे आ गया 53 यहाँ पे आ गया उस टाइम 5.9 से ज़्यादा आ रहा है उसका चलान डिफरेंस आना चाहिए। जो गाना बजा रहा है कोई भी गाना बजाए कुछ भी बजाए 10 डेसिबल से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और उसका समझ में आया कि नहीं आ रहा है क्लियर हो गया क्योंकि क्या है हाँ उस बिल्डिंग को पता नहीं होना चाहिए कि आप रीडिंग लेने आए क्योंकि अगर उसको पता हो गया तो पहले डीजे का साउंड कम कर देगा तो आप फिर करोगे नहीं तो बिना इन्फॉर्म किए आपके पास कंप्लेन है तो आप बाहर रीडिंग लोगे बाउंड्री से और फिर उसको इन्फॉर्म बंद करा के फिर से रीडिंग दोनों में 10 डेसिबल का डिफरेंस आप देखो उसका सॉफ्टवेयर चाहिए अगर है चलान करने का चलान करने का चलान दो
आप पर्ची निकाल सकते हैं। एक जावा, एक दूसरा दिया, दोनों को टेन 10.5 भी आ गया तो आप छोड़ देते हो, लेकिन अगर 14 आ गया 15 आ गया तो आपके पास कंप्लेन है और बैंक जो है गाना बजा उनका मैंने परमिशन लिया है मेरे पास जो आप क्या करो कांग्रेस से वहाँ से बिना मेरे हाँ जहाँ तक परमिशन है परमिशन बाउंड्रीज उसका रेडी ले लिया सर। उसके बाद आगे मेरे को ऑफ करा फिर से रीडिंग बाहर रीडिंग उसी जगह अब उसमें हम देखेंगे डिफरेंस 10 डेसिबल से ऊपर है कैसे डिफरेंस देखेंगे LAQ 64.65 LAQ में जैसे आपका अभी 68 आ रहा है, अगर ये पहले रीडिंग लिए तो 68 आया, जैसे रीडिंग लेने के रीडिंग जब चेक किए तो आपका 58 आ गया। जब जो ये 10 के डेसिबल के ऊपर अगर हुआ तो आपका ये चालान लग जाएगा। इसको ध्यान रखना है बिना इन्फॉर्म किए पहले रिविजन है देन इन्फॉर्म करके बात हाँ, वो जैसे रूम के अंदर में तो GPS ऑन नहीं होगा, जैसे आप बाहर जाकर के मशीन को 2 मिनट अंदर रखिएगा अपने आप ऑटोमेटिकली GPS ऑन हो जाएगा। और जब आप रीडिंग प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपका GPS कोऑर्डिनेट आपका जैसे आपका पहले वाले में आपका GPS कोऑर्डिनेट आया है। सर ये देखिए GPS लोकेशन बाद में इन्फॉर्म करके 6 तारीख को 6 मई का मैं सो रखा हूँ घर वाला वो बगल वाले ने आवाज तो अगर आप जैसे कोई आपको चैलेंज किया कि आपने कहाँ पे रेट लिया या क्या लिया, GPS कोऑर्डिनेट मार के आप बता सकते हैं इस टाइम पे उसमें डेट टाइम सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप जैसे कोर्ट में जब आप कभी ये देते हैं तो कोर्ट में ये परमिसेबल है तो कोर्ट भी आपको ये नहीं कर सकता बोला सर यहाँ पे। और उसमें देखिए यहाँ पे आपका सब कुछ है, जैसे आप एक ऑपरेटर नेम जैसे आपका नाम जयंता से आपका नाम आ गया, जो कल्प्रेट है उसका नाम आ जाएगा और एक विटनेस है, कोई भी एक विटनेस हो जाएगा। जैसे कोई राह चलता ही कोई हो गया या और कोई हो गया, आपका सबऑर्डिनेट कोई हो गया उसका साइन नंबर आ जाएगा। ये जब आप कोर्ट में चालान का केस करेंगे या कोई चैलेंज होता है कोर्ट में तो ये परमिसेबल हो जाएगा। और इसमें आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, सब ऑटोमेटिक है, सारा चीज़ ऑटोमेटिक है, प्रिंटिंग ऑटोमेटिक आ जाएगा, सब कुछ ऑटोमेटिक है। आपको बस आपको जैसे एक तुरंत चालान लिया, ये जैसे आपका साइलेंसर है, आजकल साइलेंसर आता है ना, बड़ा बड़ा साइलेंसर होता है जिसमें बहुत आवाज़ आता है, तो उसको वो बोलो पूरा इग्नाइट करो उसको, वो करो आप 10 मीटर दूर से या 5 मीटर दूर से आप उसका ये ले लिया रीडिंग ले लिया, उसके बाद उसको बोला कि तुम कम कर, उसके बाद फिर से रीडिंग लिया। आप जो भी कर सकते हैं 8 ग्राउंड, एक बार पावर बैंक यूज़ करिए तो आप 8 घंटा और दोनों जो कंप्लेन किया उसके 8-10 घंटा काफी से चार्ज कर जैसे बाकी का या बैटरी आपका चार्ज 8 घंटा 7-8 घंटा का बैटरी आ रहा है उसमें क्या है कि आप और रिचार्जेबल बैटरी बाउंड्री से आप अपना रिचार्ज कर सकते हैं। बाउंड्रीज उसके जहाँ पे परमिशन है, जैसे परमिशन मैंने ले रखा है पूरा एरिया, अब इसमें इंटर नहीं करना आपको बाउंड्री
Just focus on LA decibel level and this is the notification to start the challan. वो आपके इसके लिए खाली ये जो तीन पैरामीटर है सर LAEQ, LA max, LA मतलब चार क्या है Thank you so much, sir, for instructing how to operate and introducing about the calibration and for interpreting the readings and for instructing practically how to use the sound level meters today. I hope we all have a fruitful day. Last but not the least, we will have vote of thanks. So may I request Hizam Ambika, research scholar from Manipur University, to kindly come and take the time. Insightful program that is handing over of sound level meters and training program for police officers. First and foremost, I express our deepest gratitude to our Honorable Chief Guest, Sri Arun Kumar Sinha, IAS, Principal Secretary, Forest Environment and Climate Change, Government of Manipur, and Chairman, Manipur Pollution Control Board, for gracing this program with his presence. I extend my sincere thanks to our esteemed guest of honor, Dr. T. Brajakumar Singh, Director, Environment and Climate Change, Manipur, for his valuable insights and motivating words which have added immense significance to today's program. I also express heartfelt appreciation to Dr. W. Rosen Singh, Member Secretary, Manipur Pollution Control Board, as the president of today's function, for his leadership, direction, and continuous support in organizing this important initiative. Our sincere thanks to L. Homendra Singh for delivering the welcome address and setting the context for this meaningful program. I would also like to extend our gratitude to Sri Ghanshyam Singh, Senior Sales and Application Engineer, Kasela, India, for conducting the technical session and sharing his expertise which highly benefit our police officers in the effective use of sound level meters. We are deeply thankful to the Superintendent of Police and officers from Imphal West and Imphal East districts, and to all the participating police officers for their active participation and cooperation. Your role in enforcing the Noise Pollution Rules 2000 is crucial for maintaining environmental harmony and public peace. I also acknowledge with appreciation the presence of our respected media personnel. Your support in disseminating information and creating public awareness plays a vital role in environmental protection efforts. We extend our sincere thanks to the management and staff of Hotel Classic Grande for their hospitality and arrangement, which have contributed to the smooth conduct of this program. My heartfelt appreciation also goes to all the officials and staff of the Manipur Pollution Control Board who work tirelessly behind the scenes to make this program a success. And finally, I thank each and everyone present here today for your valuable time and participation. Thank you.
So it is not good to listen all, and we know that if this decibel level, the high pitch of the song may affect, it's drastically impact to the students also. So we can try to control those things by using educating the people and by enforcing the rules and acts. So ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯍꯦꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯚꯥꯏꯔꯁꯀꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯐꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯧꯕꯗ ꯃꯥꯡꯕꯗ ꯁꯥꯎꯁꯦꯅ try to make the enforcement regularly and try to educate people. Near us. Lots of noise pollution, I mean, we all know. But the issue is, I think we are not sufficiently aware about this harmful effect of this noise pollution. The rule also provides for what is the allowable noise level that is allowed by as per the rule. So that's where I say that it's your duty They all are using our equipments. So this is the rule, NGT rule. Na? So this is the rule. Why state PCB and Pollution Control Board or police departments are purchasing these equipments. Residential and silence zone. This is some training programs from other states. We especially design our kit for Indian Police GPS. Password protected memory also included in this equipment. Nobody can delete the data without. And this is the print report. So if we see. Okay, sir. Okay. So after that we just okay. Yes, sir.
कैलिब्रेटर बताएंगे सर सर्वे Everyone, I, on behalf of the Manipur Pollution Control Board, would like to propose the vote of thanks for this significant, insightful program.